all plants and animals, they have high content of water in their body. So normally animals like us also, कितना हमारे अंदर भी कुछ तो यहाँ पे तो 80 to 90% it's written. So basically वही 70 to 80% we also have water. Human beings, they have water. Okay. So because of this water inside our body, okay, so our temperature is maintained. तो जल्दी ठंडा नहीं होता. Okay. So if you are feeling very cold, like the people who feel very, मतलब बहुत जल्दी उनको shivering होता है, इसका मतलब है उनके बॉडी में वाटर की कमी है. Okay. So if you are feeling shivering or anything, so it's not because ki you are very thin, that's the reason you are feeling cold. Okay. So people who have less water in their body, they are not able to maintain the body temperature. So because of the high specific heat capacity, the temperature is maintained in all the seasons. And that's why if you remember, okay, human beings are called warm-blooded animals. Okay. Okay. Now this question comes like understanding the high and the low heat capacity. Now what will happen? Now understand that cooking pan, I'll read that whatever is written, but understand something. Like cooking pan matlab kya hai? See, normally it is made up of copper, it is made up of iron. Iron matlab steel, or it is made up of aluminum. Now all three are what? Metals. So metals ka specific heat capacity, if you observe, it is very low. It is low means it will acquire the heat energy faster. मतलब थोड़ा सा भी उसको गर्म किया तो जल्दी गर्म हो जाएगा. Now what will happen? जल्दी गर्म हो जाएगा. So whatever food items you have kept, okay, in that cooking utensil, it will get, मतलब it will start getting burned. Okay. So it will not be cooked. It will be burned or it will be charred. Okay. So if you want to cook evenly, थोड़ा सा अच्छे से पकना चाहिए, not getting burned, क्योंकि जल्दी बर्तन जल्दी गर्म हो जाते हैं बिकॉज ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, लो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी. तो इसके लिए आप क्या करो, यू मेक द बेस ऑफ द कुकिंग पैन थिक. ओके, थिक करोगे तो क्या होगा, जल्दी गर्म नहीं होगा. एंड बिकॉज ऑफ जल्दी गर्म नहीं होगा तो व्हाट विल हैपन, देयर विल बी इवनली कुकिंग, मतलब इवन कुकिंग होगा, प्रॉपरली कुकिंग होगा, इट विल नॉट गेट बर्न. ऑल्सो because if you are making thick, what will happen, the heat will not be evaporated, मतलब बहुत जल्दी ठंडा नहीं हो जाएगा. नहीं तो because specific heat capacity low है, so what will happen, जल्दी heat energy छोड़ देगा, ठंडा नहीं हो जाना चाहिए. So therefore if you make cooking pan thick, base thick, so it will get heated slowly. Because of that slow rate, what will happen, you will be able to do proper cooking, and after cooking the food will remain warm. Okay. Why the base of an electric iron is made thick and heavy? Same thing, same concept. So that it remains hot for a longer duration. Okay. Even after the current is switched off. Okay. थोड़ा सा ज्यादा देर के लिए करना है तो उसको थिक बना दो बस, बिकॉज पतला आयरन रहेगा तो होगा भी नहीं. Okay, and we already studied that why the calorimeter is made up of thin sheet of copper, because by making the vessel thin, its mass and hence the heat capacity becomes low, so that it takes a negligible amount of heat from the content to attain the temperature of the content. So basically it wants to maintain the temperature very fast. सोचो तुमने ठंडा पानी डाला तो ठंडा पानी का जल्दी से वो टेम्परेचर अक्वायर कर सकता है. यदि तुमने गर्म पानी डाला तो गर्म पानी का टेम्परेचर जल्दी अक्वायर कर सकता है. ओके, बिकॉज इट हैज हीट कैपेसिटी लो. I hope you understood. Any doubt in this case? Study numericals. I'm not doing extra numericals, only the examples. So we have studied thermal capacity, that is C dash is equal to, oh sorry, we have studied Q is equal to C dash delta T. ये delta T को कैसे लिखेंगे? Can I write dt? So you will understand. Q और एक क्या फॉर्मूला है? M छोटा c
and delta T. Okay, so these two formulas we are going to talk about. Now if you notice the first question, an iron ball requires 5000 joule. Now 5000 joule बोला तो that means first question में given क्या है? Q is 5000. टेम्परेचर राइज मतलब dt क्या दिया हुआ है? इट्स अ डेल्टा T 10 डिग्री सेल्सियस. ओके, कैलकुलेट द हीट कैपेसिटी. नाउ हीट कैपेसिटी ऑफ द आयरन बॉल. इफ यू नोटिस इन्होंने आपको मास नहीं दिया हुआ है, तो नॉर्मली आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना है? दिस फॉर्मूला यू आर गोइंग टू अप्लाई बिकॉज इट इज टॉकिंग द हीट कैपेसिटी ऑफ द आयरन बॉल. इफ दे आस्क यू, वो लोग आपको डायरेक्टली पूछेंगे specific heat capacity. Specific heat capacity means small c. But specific heat capacity के लिए if they give you, if they ask you, they will give you mass also. इसमें mass तो दिया ही नहीं है, so you have to take this formula. First question will be this formula. So what will be C dash? It is Q upon dt. That is 5000 upon 10. So it will be 500 joule per Kelvin. क्योंकि यहाँ पे मास नहीं है, so it is joule per Kelvin. So this is called heat capacity or it is called as thermal capacity. Please याद रखना इसको. This is for the entire body. Okay. Now let's do the second question. Now they are asking calculate the heat energy. मतलब they are asking you Q. Okay. Temperature of 2 kg of water to 10 degree Celsius. So dt क्या होगा? What will be dt? 50 minus 10, that is 40 Celsius. Degree नहीं लिख पा रही हूँ. 2 kg mass is given 2 kg. Okay, and if you notice, देखो उन्होंने दिया हुआ है specific heat capacity छोटा c दिया हुआ है, that is 4200. So what will be my Q का formula? This is the formula. I need to apply this formula. क्या आएगा ये? 2 into 4200 into 40. ठीक है? ओके, कितना आंसर आएगा? दिस इज 80 into 4200. लेट मी चेक. आई एम नॉट कैलकुलेटिंग. 3435 नहीं, हाँ 3 हाँ 336000. हाँ 33, हाँ सर, हाँ ओके 32 ओके, ठीक है. आई होप यू अंडरस्टूड. नाउ लेट्स डू दी थर्ड सम. क्वेश्चन पूरा पढ़ना पड़ेगा. metal piece of 50 grams. Now 50 grams has to be converted into kg. Okay, metal बोला है उन्होंने. चलो ठीक है. Okay. Now mass m is equal to 50 grams. Please notice the unit, नहीं तो तुम गड़बड़ कर सकते हो. 50 upon 1000, that is 0. क्या आएगा? 0.5 किलोग्राम. 0.5 किलोग्राम. ओके. नाउ जूल्स दिया हुआ है, Q दिया हुआ है. Q is 2400. They are asking that it is raised the temperature. मतलब dt क्या है? 327. और नहीं 327 minus 27 because 27 से 327 जाता है, so it is 300 degree Celsius और Kelvin. चल Kelvin लिखते हैं, that becomes easy. So what is the specific heat capacity? तो क्या होगा? T is equal to, मैंने सीधा फॉर्मूला लगा रही हूँ, Q upon m delta T. हाँ m delta T. तो Q कितना है? 2400 अपॉन m कितना है? 0.05 into 300 Kelvin.
तो जो भी है आंसर इट्स रिटन हियर 160. ठीक है, अंडरस्टूड? यस. मैम यहाँ पे like for the temperature Celsius to Kelvin you don't have to convert. No, there is because you nothing. direct- No, there is no conversion needed. So if you are saying 27 degrees Celsius, just one second. Okay, so if you are saying 27 degrees Celsius, it means it is 27 degree Kelvin, matlab 27 Kelvin. Okay, so when you are doing Fahrenheit and that time you need to convert, but in this case calorimetry के chapter में Celsius रखो या Kelvin रखो, doesn't matter. We don't have to, it's not like study of gas law. Okay, we don't have to convert. So if you are writing Kelvin, it will be per kilogram per Kelvin. Please don't forget the unit. Chalo, let's do the fourth sum. I think not second sum. मैम एक डाउट है, हाँ बोलो. ऐसा है ना टेम्परेचर के लिए, when two bodies at different temperatures are placed in contact, the resultant temperature is the temperature in between the two temperatures. Yes, we'll be doing that sum. दो बॉडीज का ऐसा टेम्परेचर होगा 80 डिग्री सेल्सियस और 60 डिग्री कर रही सेल्सियस. हूँ हम है ना, क्वेश्चन है, we'll be doing that sum. Okay, तो उसका मीन टेम्परेचर 70 होगा ना? not necessary, हम लोग क्वेश्चन देखते हैं ना. Let's do some sum. Okay. ओके मैम. एक काम करते हैं ना, we'll do some, ये सब थोड़े से okay, let's do this sixth sum. We'll be doing all the sums, so don't worry. Let's do this sixth sum. Okay, now वहां पे मत देखो, यहाँ पे देखो जो मैं कर रही हूँ. Okay, bucket contains 8 kg of water, so m1 is 8 kg, 8 kg, and t1 जो भी है, I think it is cold body, yes, so 25, and m2 कितना है 2 kg, और वो भी पानी ही है, तो T2 is 80, मतलब ये हॉट बॉडी हो गया. Now neglecting the heat energy absorbed by the bucket, okay, calculate the final temperature, मतलब you are supposed to find T. Now principle of calorimetry का क्या है? Heat lost by the body is equal to heat gained by the body. Okay, by the cold body, yes. Now you have to write by principle of calorimetry and all that. So chalo, heat loss by the hot body karte hai. So let the final temperature, we can write, let the final temp be T. Okay, so let's see. So heat lost by the hot body. So hot body kya hai? Okay, and both are specific heat capacity दोनों का क्या है? Same है, because both are water. तो C is remaining same, तो उसको कुछ हम लोग छेड़ नहीं रहे. तो एक काम करते हैं, heat loss by the hot body लिखते हैं. What will be heat loss by the hot body? MC delta T. M की जगह पे we'll be writing 2C. T कैंसिल नहीं किया. डेल्टा T को कैसे लिखेंगे? 80 minus T, फाइनल टेम्परेचर, राइट, इक्वल टू ठंडा वाला क्या करेंगे? 8C, इट विल बी T minus 25. फाइनल टेम्परेचर ज्यादा रहेगा ना कोल्ड बॉडी से, तो CC कैंसिल. जस्ट नोटिस कि यहाँ पे सब किलोग्राम है क्या? हाँ है. चलो ना इसको सॉल्व करते हैं. व्हाट विल बी द आंसर? तो इसमें से मैं C कैंसिल करती हूँ. ओके, क्या होगा? इट विल बी 80 minus T is equal to 4T minus 25. मैंने क्या किया? डिवाइड बाय 2 कर दिया, ऐसे ही, जस्ट टू सिंप्लीफाई. 2 इधर था, यहाँ पे 8 था, तो 2 4 जा 8, तो मैंने 4 कर दिया. 80 minus T is equal to 4T minus 100. ठीक है, 100 को इस तरफ ले लेते हैं, तो इट विल बिकम, कितना आएगा इसको? 180. 180. एंड इसको क्या बोलेगा? 3T. तो कितना आएगा T? T is
60 डिग्री सेल्सियस और केल्विन जो भी, ठीक है? 5T no? क्या रे 5T? हाँ 5T ओ सॉरी सॉरी, Minus T होगा. ओ सॉरी सॉरी, माइनस टी है, सॉरी। तो 5T, तो कितना आएगा आंसर इसका? 36. 36. यस, तो 36। गुड। Any doubt in this case? Fourth question. Some heat energy is given to 120 grams of water. The temperature rises by 10 Kelvin. Now, when the same amount of energy is given to 60 gram of oil, उसका temperature rise होता है 40 K. Okay. Specific heat capacity of water is given. They are asking कि आपने heat energy water को कितना दिया? And what will be the specific heat capacity of oil? So very easy, very simple question. So basically, first of all, आप क्या करो? Try to take out the heat energy given to the water. So M is given as 120 grams. You need to notice, if you see यहाँ पे 4200 joule per kilogram दिया हुआ है. So you need to convert this into 120 upon क्या कितना होगा? It will 120 1000 upon 1000, so it will be 0.12 kilogram, or you can keep 1000. ठीक है. What about C? C कितना है? 4200. What about the temperature difference? 10 Kelvin. इसका Q क्या रहेगा? Simple है, 0.12 into 4200 into 10, and जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है आंसर 5040 joule. Now this same heat energy is given to oil. तो उसमें Q वापस वही फॉर्मूला लगेगा, बट इसके जगह पे mc/dt. तो 5040, मास कितना है ऑयल का? 60 ग्राम. तो कितना आएगा रे? 0.06 into kilogram. हाँ किलोग्राम का, into C. Now we don't know what is the specific heat capacity of oil, नहीं पता. और इसका टेम्परेचर इंक्रीज कितना है? 40 केल्विन. ओके, तो C is equal to 5040 into 40 upon 0.06. बहुत सारा कैलकुलेशन है, कर लो. आंसर कुछ आता है 2100 जूल पर किलोग्राम पर केल्विन. upon 40 ना? यस यस, सॉरी. ठीक है. Okay, so this was my fourth question. Any doubt in this? No, ma'am, no doubt. And then let's go to the next question. We have done 6th question. Let's go for 5th. Now, okay, now this case, now they are asking you heater. So if you remember, heater क्या देगा? Heater also will be giving energy. Okay, it will give you heat energy. So what is the energy formula? Energy का formula क्या है? Depending on the power. So if you remember, energy is work per energy में हमने पढ़ा था, energy released by any appliance, it will be E is equal to P into T. Okay. Oh sorry, नहीं हमने ये पढ़ा नहीं है. So just study now because we have not done current electricity. I was just thinking कि मैंने पढ़ाया था कि नहीं. Anyways, so energy given out by appliance, any appliance, okay, is power into time. मतलब सोचो उसका पावर जो भी रहेगा और into time करोगे, so that will be energy by appliance. Okay, we have studied in I think 9th standard or 8th standard, जहाँ पे हम बिल कैलकुलेट करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल कैलकुलेट करते हैं, वो वाला फॉर्मूला है ये. E is equal to PT. Now in this case, P कितना है? P is 1000 watt. Okay, and T क्या है? 2 minutes. So let's convert the 2 minutes into seconds. 1 minute कितना है? 60 second. 2 minute will be 120 second. चलो, तो एनर्जी रिलीज्ड कितना होगा? इट विल बी 100 नहीं है, सॉरी, इट इज 1000.
तो इट इज 1000 into 120, तो कितना होगा ये 12 into 10⁴ जूल्स, ठीक है, 12 into 10⁴ joules. Now they are asking you the heat capacity. So this E is actually heat energy, Q. So what is the formula? Q is equal to mc dt, मतलब delta T. तो Q की जगह पे what we'll be putting 12 into 10⁴. M कितना दिया हुआ है 5 kg. C हमको निकालना है and टेम्परेचर डिफरेंस कितना है 31 minus 25 कितना आता है 6. ओके तो C क्या होगा, what will be C? C is 12 into 10⁴ upon 30. निकालो जो भी आंसर आएगा. 12 ये क्या रहेगा 4 upon 3 into 10⁴. तो कितना आएगा रे, राइट ना? नहीं 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 नहीं, राइट है क्या? इट विल बी 0.4 Yes, ma'am. into 10⁴ जूल पर किलोग्राम पर केल्विन. ओके आई होप आई एम राइट, आई एम नॉट श्योर, देख लो एक बार. Yes, ma'am. Correct. Okay, so this is the fifth question. So whenever you have electrical heater or iron, ऐसा iron भी दे सकते, and if they are giving you power, first find out the energy. Energy क्या है? P into T. Okay, P into T है. तो उसमें से what will be the answer? Q. Energy is the Q, and then you just apply and get it. Okay. So let's wind up now.